Very good morning, dear student. So, in our last video, we discussed about the poem Train. We also discussed the message of this poem also, no? Over the mountains and over the plains, over the rivers, here come the trains. ट्रेन कहाँ से जाती है, कहाँ से आती है, फिर क्या कैरी करके ले जाती है, नो? सब हमने पढ़ा था. Now we are going to see the question answer. I am going to also share this question answer in your WhatsApp group. But let's discuss this question answer. So I hope you all are ready. Okay, what is our first question? Where do the trains run? Where do the train run? So, what is the answer? The trains run over the mountains, plains and rivers. हमारा क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? ये रहा. The train runs over the mountains, then plains, then over the rivers. You have to write first question answer from this first three line. Over the mountains, over the plains, over the river. Okay? Next, what are the precious loads that they carry? तो हमारी ट्रेन क्या क्या लेके जाती है कैरी करके? So your answer is in second stanza that they carry passengers, then mail, parcels and letters, etc. Okay, let's see the third question. When do the train run? So, your answer is thousands of freight cars and all rushing on through day and darkness. So, your answer is trains run through the day and night. Okay? Now, next question, fourth one. What is dusk and dawn? So, dawn is the time when the first rays of the sun touch the earth in the morning. DAWN मतलब कि क्या होता है उसका अर्थ कि जो हमारा सूर्य है वो सुबह में पहली किरण अर्थ के ऊपर रखता है, उसको बोलते हैं dawn. Then what is the dusk? Dusk क्या है? Dusk is the time when the sun sets and the night begin. ये जो dusk है उसका मीनिंग क्या होता है? शाम ढल जाती है, सूरज डूब जाता है, नो? और नाइट स्टार्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? dusk. Let's see another talk time. Do you enjoy train rides, children? क्या आप सबने कभी ट्रेन राइड्स एंजॉय की है? Yes, I enjoy the train rides. If you had to travel over a long distance, how would you like to go and why? अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कि बड़ी जर्नी का चांस मिले तो आप हाउ वुड यू लाइक टू गो, आप कैसे जाओगे और क्यों? आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन. मैं कैसे जाऊँगी? आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन. आपको क्या पसंद है? बाय प्लेन जाना है, बाय मोटरसाइकिल, बाय कार, बाय रिक्शा. सो वो आपको लिखना है. देन यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस दिस. आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन बिकॉज वाइल ट्रैवलिंग I can talk with my friends, I can play around in the train. मुझे ये पसंद है. If you are not like to go by train, then you can write I would like to go by auto rickshaw, by
car, by bullock cart, no? Okay. Draw and name the things you would need in this suitcase. For an example, if you are going for the picnic, then what will you take the things? आप कौन कौन सी चीज़ें लेने वाले हो? So here is the same things you have to write in the suitcase box. Okay. Describe an interesting train or bus journey you have taken or would you like to take. Write 4 sentences about your journey. You can use some of the following words and phrases. So here you have to write the sentences about your journey. About your journey. क्या करना है आपको? अपनी जर्नी के बारे में लिखना है. Let's see. Here you have to write. For an example, I went to the railway station with my father. Okay. Then you have to write to go to Mumbai. Okay. There were many people at the railway station. So here we have to use. Okay. Then you have to write. Then there were crowded tea stall. आपको क्या करना है बच्चों? ये यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, many people, crowded tea stall, station, bus station, river, no? So you have to use these words and here you have to write the full sentences. For an example, there were many people at the railway station. So where is the railway station here? You can write bus station also. You can write railway station also. Then there were crowded tea stall. Okay, here you can see crowded tea stalls. Then at the station, we purchased the ticket and reached the platform next to the train in which we had to get it. So let's write. ये क्या है? आपको फर्स्ट तो चूज करना है. एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी. आपने बस में अच्छे से जर्नी की है या फिर ट्रेन में की है या फिर ऑटो रिक्शा में की है. सो इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी. डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी. किसके बारे में बताना है? एन इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड यू लाइक टू टेक. Write 4 sentences about your journey. About your journey. उसके बारे में आपको लिखना है. Okay. Word building. Sort out these different means of transport into correct groups. One is done for you. Okay. So आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो आपको सिखाया गया था नो कि कौन सा व्हीकल कहाँ जाता है नो. फॉर एग्जाम्पल, लैंड, देन एयर, देन वाटर. ओके. सो ज़मीन के ऊपर जो चलते हैं वो कौन से व्हीकल है? बस है, कार है, ट्रेन है, बाइसिकल, देन ट्रक, देन कौन कौन से हैं वो आपको काउंट करने हैं. ओके. देन एयर. एयर मतलब कि हवाई में कौन से उड़ते हैं व्हीकल? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. ओके. वाटर में, पानी में क्या चलता है बच्चों? शिप, SHIP, शिप. देन BOAT, boat. Then steamer. Okay, very good. Complete the sentences. You have to complete these sentences. Give me some blank to eat. Okay, give me some blank to eat. So कौन सा वर्ड्स आएगा इसमें?
जस्ट थिंक, गिव मी सम ब्लैंक टू ईट, ईट है तो खाने की चीज़ ऑब्वियसली होगी. यू हैव टू पुट फूड, FOOD, food. Then second one, play with me, मेरे साथ खेलो. Swim across the river, पानी में तैरना है. Let's get on the train. So dear students, in our next video we will discuss the another story. Bye. Thank you very much. God bless you.